Hello everyone, good evening, welcome to this session. How are you all? Hi Bhagmat, welcome to this session. Hello others. Let's get started with Linear Algebra Masterclass. This is the third class, not on algebra but on quants. Okay, so I'll make the numbering clear. Abhi ke liye samajh jao. Hi Sampath, welcome to the session. Very good evening to all. So today we'll be doing some linear algebra questions, but as we do it in every set, what we'll do is first of all we'll have an intro. So intro ho jaye linear algebra se. Hi Zishan, welcome to the session. So what intro am I going to give you here? No formulas, nothing. Algebra needs no formulas. You just need to know the concept behind it. Okay. So what concept are we going to discuss? Let's see. First of all, I'll tell you a scheme how the pedagogy works. Pedagogy, I mean teaching, the chronology, or you can say ki standard 1, standard 2, standard 3, standard 5, 8, 10, क्या difference है इन सारी चीज़ों में. Hi Khushi, welcome to the session. So, let me just quickly tell you about the scheme. A kindergarten question is, or grade 1 question is, 5 plus 3 is equals to how much? Anyone? Quick maths? 5 seconds? मैं आपको एक इजी क्वेश्चन दे रही हूँ, जितना सही क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा लाइक आपके करेक्ट आंसर्स बनेंगे. आई एम डूइंग गुड संपत नाउ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. That is just a migraine pain which comes up. Otherwise things are okay. Of course. Now, a grade 4 or grade 3 question would just change these numbers into words and would ask you to add 5 apples with 3 apples. Now, this is the only change. Hi Ray, thank you so much for asking. I am totally fine right now. It was a general, like it happens. Migraine वालों को ये सब होता रहता है, ठीक है? So it's like fine now. It's absolutely okay. Thank you so much for asking. That's a difference between grade 1 and grade 3 or question you can say. Similarly, grade 5 में क्या कर देंगे? इसी same question को they will try to convert in a way that let's take the example of Bhagmat and Sampath. Okay, so Bhagmat had 5 apples and Sampath had 2 apples less than Bhagmat. So what is the total number of apples they have? तो क्वेश्चन में क्वेश्चन इंसर्ट किया गया है, क्वेश्चन में एक और पार्ट इंसर्ट किया गया है. दैट मेक्स अ ग्रेड 5 क्वेश्चन. जस्ट लाइक दैट इफ यू मूव टू ग्रेड 8 क्वेश्चन, क्या कर दिया जाएगा? कह दिया जाएगा दैट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल्स ऑफ भागमत एंड संपत इज द फर्स्ट प्राइम नंबर. व्हाट्स द फर्स्ट प्राइम नंबर? 2. यानी भागमत एंड संपत के बीच में 2 एप्पल्स का डिफरेंस है. सो इफ एनी वन ऑफ द एप्पल्स और एनी वन ऑफ द पीपल डेटा इज गिवन टू यू, यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, चाहे मैं आपको 5 दे दूं या 3 दे दूं, है ना? दैट मेक्स अ ग्रेड 8 क्वेश्चन. एंड मूविंग टू ग्रेड 10, जो लेवल आपको एक्चुअली कैट दैट में पूछा जाता है, दैट इज ग्रेड 10 के क्वेश्चन. एंड ग्रेड 10 के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका? एक्स एंड वाई. एक्स apples with Bhagmat and Y apples with Sampath, and then उसके बारे में सारी डिटेल्स दे दी जाएगी कि x plus y जो है वो 8 है और x minus y जो है वो 2 है. यानी the difference between the number of apples of Bhagmat and Sampath is 2 and the sum of them is 8. Find the number of apples with each of them. That makes it a grade 10 question. This is the complete pedagogy I wanted to tell you people कि एक ही कॉन्सेप्ट है जिसे बार बार घुमा फिरा कर आपको वर्ड्स में फंसाने की कोशिश की जा रही है. हाय शायन, वेलकम टू दिस सेशन. ओके, सो कीप दिस इन माइंड कि आपको वर्ड्स में नहीं फंसना. मैथ्स की डिस्कवरी ही एक्चुअली इसीलिए हुई थी कि जितने भी ओरल प्रॉब्लम्स है, वर्ड के प्रॉब्लम्स है, उसको नंबर में कन्वर्ट करके सिंपली सॉल्व किया जाए.
So keep it in mind that your basic approach should be to break down the words into numbers. Hi Riddhi, welcome to the session. बिल्कुल रे, CMAT वाले क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग के कोई लेवल अलग थोड़ी है, मैं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस करने वाली हूँ बिकॉज इट्स द फर्स्ट वीक. ओके, सो आपको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए. मैंने बोला ये सारे मैंने जानबूझ के अप्रैल का मंथ ऐसे डिजाइन किया है कि CMAT वाले एंड बाकी कैट वालों को भी दोनों का काम हो जाए. Hi Riddhi, maths is not my favorite subject. No worries Riddhi, this is all management is about, that even if the things you don't like, you have to have a upar sa concept in that case. Okay, hi Sonu, welcome to the session. How are you? Let's get started with the real question guys. Sonu, the date is not fixed, it's not released in the official website, so we'll not say anything, but people are saying 23rd. So far so forth, we will just consider it to be 24th, 23rd only. Let's say 22nd ko Eid hai. Someone was saying that 23rd is Eid. No, 22nd is Eid. After the class I just checked it. Riddhi, of course. Okay everyone, please let's get started with the first question. Let's see how you can break the question into numbers. I'll just give you 30 seconds to understand the question. Solve आपको मेरे साथ करना है, ठीक है? So don't be in a rush. 30 seconds में अगर solve हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, but अगर ना हो पाए तो solve it with me because I don't want you, okay? I don't want you to just understand the answer of this question. I want you to understand the approach. Let's see Riddhi what happens. Oh, yes, Zishan. But then I was just going by the holiday calendar, Zishan, and therefore saying that maybe 22nd. अगर चांद नहीं दिखा तो of course 23rd हो जाएगा next day. Thumbnail नहीं था, CMAT इसलिए पूछा. हाँ, कोई बात नहीं. It's okay रे. Fine. This is only for my very close students. वरना तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, मैं तो इसे रिकॉर्ड करके डाल देती. So the close ones knows the things. मैम थैंक यू सो मच, एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो गया है, 10 out of 12 सही हुआ है मार्क में. वाओ एक्सीलेंट संपत, थैंक यू सो मच फॉर मेंशनिंग हियर इन द लाइव संपत, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. इट रियली फील्स गुड इफ आई एम एबल टू मेक एनी पॉजिटिव चेंज और इम्पैक्ट इन योर परफॉर्मेंस. And so sweet of you Sampath, thank you so very much for mentioning this. That gives me a motivation boost कि चलो और काम करना है, क्योंकि अब assignments तो इतने हो रखे हैं ना कि पागल ही हो जा रही हूँ. मैंने सोचा था कि I would be starting some vocabulary things for you on Instagram. थोड़ा एक और वीक दे दीजिए मुझे, I'll settle things down and I'll start that over there. Thank you so much Sampath. रिद्धि ने आंसर निकाल दिया है क्योंकि मैंने 30 सेकेंड से ज़्यादा दे दिया. All right, let's get started everyone. So over here let's read the question properly. ठीक है, पहले क्वेश्चन को प्यार से पढ़ते हैं और फिर रियलाइज करते हैं आंसर क्या होना चाहिए. A fraction is such that the numerator is 5 less than the denominator. So सबसे पहले हमें ये समझना है कि what should be my x और what should be the number जिसके रेस्पेक्ट में मैं दूसरा नंबर निकालूंगी. Your answer in this question, or like the answer for the question which I asked right now, would be denominator. Tell me why. Why would we go with the denominator? Any idea? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 5 less than the denominator. यानी अगर मैं न्यूमरेटर को x ले लूँ और डिनोमिनेटर को y, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा? That x is equals to y minus y. I mean y minus 5. Yes or no? That's my equation number 1. Let's read the question. Second part of the question says also 4 times the numerator is 1 more than the denominator. Denominator was y, numerator is x. So they say that 4 times x is actually equals to 1 more than the denominator. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसे हमें सॉल्व करना है. Who will help me solve this? रिद्धि खुशी ने तो ऑप्शन ए आंसर दिया है. Let's try solving this guys. This is, see, I'll show you a basic way of solving it. Otherwise you can take the other way also. Okay. Now I know that I can actually do it in the vertical way. जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, that you just take it the way
फर्स्ट ट्रांसफर x एंड y ऑन वन साइड एंड द नंबर ऑन द अदर साइड। तो अगर मैं वैसा करूंगी तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5 रह जाएगा एंड यहाँ पर 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू +1 रह जाएगा। एंड अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, लेट्स से ओके y को एलिमिनेट करना है, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सब्ट्रैक्ट करना यानी ये वाली साइन को जस्ट ऑपोजिट कर देना, तो प्लस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव प्लस हो जाएगा एंड दिस प्लस विल बिकम नेगेटिव। सो आई विल बी गेटिंग अ +x and -4x, that is -3x. I will be cancelling off this and this -3x will be equals to -6. Further, -3x is equals to -6. So x is equals to 2. Yes or no? Because negative divided by negative will give us a positive answer. ये सबको पता है. So I got the value of x as 2. That means my numerator will be 2, जो कि option C में ही है. But just because you have a none of these in the option, तो आप C को tick नहीं कर सकते because the denominator can be different. So y would be equals to how much? If you just shift this 1 to the other side, it is 4 times 2 minus 1, that is 8 minus 1, 7. So the fraction becomes 2 by 7, no doubt. This is the normal process, right everyone? दूसरा एक और process है जो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ. The other process is where you start substituting. इसको बोलते हैं substitution. For example, आप x निकालना चाहते हो या y निकालना चाहते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आप किसे सब्जेक्ट ले रहे हो. लेट्स से आप x को सब्जेक्ट ले रहे हो, तो आप x को y के टर्म्स में लिख दोगे, यानी यहाँ पर जो x है उसे y से सब्स्टिट्यूट कर दोगे. सो क्या होगा, आपको एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जहाँ सिर्फ एक y है. सो व्हाट विल आई गेट, 4y minus 5 into 4, 20 is equals to y plus 1. This y will go here and become how much? This y will go here and become 3y, and this minus 20 will come here and become 21. So y will become 7, and the moment you get y as 7, you can just calculate the value of x, which is 7 minus 5, 2. That is my x. So that gives me the same answer. So you can take any process you want, but you will get the same answer. सबको clear है? Can I see a yes in the chat please? And please like the session guys if you are watching this and finding it a bit useful. Okay, fine then. Moving forward to the second question. Please read the question thoroughly. Hi Twinkle, welcome to the session. Khushi, Twinkle, Zishan, Bhagmat. Alright, thank you so much for confirming guys. Now we have another question. इसको आप ऑप्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको प्रॉपर एल्जेब्रा का प्रोसेस दिखाऊंगी, सो दैट इफ यू डोंट गेट द ऑप्शंस तो आप फिर भी रेडी रहो. 3 consecutive even integers are such that 1/3 of the second is equals to 1/4 of the third. Find the 3 numbers. इवन इंटीजर्स है, ध्यान रहे. ऑप्शंस की हेल्प से स्मार्टली कर सकते हैं, ऑप्शंस की हेल्प से स्मार्टली कर सकते हैं. आप लोग ऑप्शन की हेल्प से करो, मैं आपको अलजेब्रा दिखा दूंगी. कंसेक्यूटिव है, इवन है. ओ खुशी came up with an answer. खुशी, you used option or you used algebra, OP or AL? Others, please give it a try. Let's figure out the reasons for eliminating each option. Yeah, Khushi, very good. So I'll start with option D. 2, 4, 6 में क्या प्रॉब्लम है? 1/3 of the second नहीं हो सकता, such that 1/3 of the second number is equals to 1/4 of the third number. Hi JB, welcome to this session. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था मैं आपको प्रॉपर एल्जेब्रा के मेथड से बताती हूँ. आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से निकाल लिया आंसर विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, आई गेस. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो एक बार एल्जेब्रा देख लें.
ठीक है, तो जब भी हम एल्जेब्रा देखते हैं ना, जब भी हमें कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस वी विल टेक अप द फर्स्ट इवन नंबर एज 2x, the second even number as 2x plus 2 and the third even number as 2x plus 4. ठीक है ना, ये एकदम प्रॉपर वे है करने का. अब इन्होंने बोला है कि 1/3 of the second number, that is 2x plus 2 by 3, okay, second number is equals to 1/4 of the third number which is 2x plus 4 by 3. अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे प्यार से x की वैल्यू मिल जाएगी. Wanna see that? I will just cross multiply and show you this as well. So 3 into 2 is 6 plus 6 is equals to 6x plus 12. Now you know that x is going to cancel out here. Look at the condition. Look at the condition. Don't you think x is going to cancel out here? थोड़ा चेक कर लीजिए, या फिर आपको लगता है कि द कंडीशन इज नॉट करेक्ट. 1/3 of the second number is equals to 1/4 of the third number. There is no condition of the first number. Anyone who can spot out if anything is going wrong here? Anyone who can spot out if anything is going wrong here? कोई नहीं बच्चे. अच्छा सही है फिर. Yes, it will cancel out. So we will not get the value of x. So how to get the value of x then? कंफ्यूज करना मेरा काम है, क्योंकि अगर मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया तो कोई और कंफ्यूज करके चला जाएगा. पॉइंट. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द समथिंग व्हिच इज 2x is equals to 4 by 4. That is the problem. We are not getting 2x is equals to 4 by 4. Sampath, check this. ठीक है, तो ये मैं आपको बोलना इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि कई बार ना आपको इस नोशन से नहीं जाना है. कई बार आपको इस नोशन से नहीं जाना है. कई बार ये प्रॉब्लमैटिक होता है. 1 by 4 is what? वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, किसी ने तो देखा. आई एम हैप्पी टू सी दैट. सो कहाँ पर प्रॉब्लम थी? यहाँ पर प्रॉब्लम थी. ओके, यू वांटेड टू से दैट संपद. ओके, इक्वल्स टू आ गया था पहले. परफेक्ट. So now let's cross multiply. 4 2s are 8, and then this is 8, this is 6x, this is 12, this will become 2x, this will become 4, x will become 2, and the numbers are 2x, that is 4. The starting number is 4, so the next two numbers will be 4, 6, 8. Absolutely easy, no doubts, no confusions. Perfecto. So the answer is option A for all of you. Okay. Simple, easy question. Now, I want to really tell you one thing, one very basic thing, that ये question आपको as a theta question अगर दिया जाए तो 3 different numbers नहीं लिखने को बोले जाएंगे. They will say sum of the numbers or sum of the 3 consecutive numbers you got. So how would you answer that? You would add up and give the answer as 18. So be ready. And मेरा ये पढ़ाने का स्टाइल है, मैंने बहुत अच्छे से देखा है that it successfully works. अगर आप मेरी गलती को स्पॉट कर रहे हो, so that is not just pointing out that you are attentive in the class, it also shows your troubleshooting skills. Always remember everyone, when you are practicing personally also, please troubleshoot. Try to find out आप कहाँ गलत जा रहे हो, because if you do that skill, आप एग्जाम में भी बहुत टाइम बचा लोगे. ऑलराइट. ओके, रे ने कुछ बहुत लंबा सा मैसेज भेजा था एंड फिर डिलीट कर दिया. चलो, वी हैव अ रुपीज रिलेटेड क्वेश्चन, अ वेरी इजी वन एक्चुअली, डिनोमिनेशन रिलेटेड. हमने बहुत बार इसे बेसिक एग्जाम्स में देखा होगा, जैसे प्लेसमेंट का एग्जाम हो गया, जैसे बैंकिंग का एग्जाम हो गया. ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, वहाँ पर आते हैं. सीमैट के लिए भी स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, सो यू गाइस ट्राई इट. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर अनिकेत. आज अनिकेत क्लास में नहीं है. इफ यू आर वाचिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन, अनिकेत, ड्रॉप अ कमेंट.
हाँ, don't worry about that, JV. It's X is the most terrifying thing in quants and in real life as well. That's true. Absolutely. Okay. So find out, everyone. This is a theta question. Aniket has a sum of 7,000s in the denomination of 500 and 100. Okay, how many 500 notes does he have if the total number of notes with him are 22? How can we get to the answer of the question? 500 को x ले ले, 500 के notes को अगर मैं x ले लूं, so how many 100 notes I have? Please help me in the steps, everyone. Don't help me in the answer. मुझे आपको framework बताना है. Tell me how will I find out the number of 100 notes? Oh, Sampath has given me the answer. Thank you, Sampath. Sampath, can you tell me how to denote the 100 notes? Very good, Khushi. Arey वाह, JV. 22 is the total number of notes, so I'll subtract it from here. Hi, Sages. Good evening. Welcome to the session. How are you? 22 minus x is the number of 100 notes I have. अब सिर्फ multiplication चलेगा. क्या multiplication? X multiplied with 500 plus 100 multiplied with 22 minus x is equals to 7,000 rupees. And if you solve this, you will get the answer. That's very easy to show, so I will not show you the working. I will rather give you another question. X will directly come out to be as 12. So 12 notes हैं हमारे पास 500 के denominations के. That's just the basic framework. Very good, Sampath. Excellent. आपने y लेके किया, but अगर आप y लेके करोगे तो you have to find out a relation between them. Otherwise आपके पास x की वैल्यू कैसे आएगी जब y आपके पास पता नहीं है? तो y को आपको x माइनस वो लेना होगा. Very good, Twinkle. Thank you so much, everyone. Let's move to the fourth question. It is an age-related question. Again, a very CMAT-oriented question for everyone. Try it out. And this should be quick. This should be answered within a second. I mean, within a minute. Please. 10 notes for 100. Very good, Twinkle. Of course, 22 minus 12 is 10. Everyone. साइमल्टेनियस इक्वेशन से हो जाएगा. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी जेवी? वही 22 माइनस एक्स वाली. साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए दूसरा इक्वेशन भी होना चाहिए ना एक्स एंड वाई के बीच में. हाउ वुड वी डू दैट? 4 years ago, Parth's age was 4 times that of Shriya. Today Parth is not there in the session again. जितने लोगों का नाम मैंने लिखा वो सेशन में ही नहीं है. आज श्रिया भी सेशन में नहीं है. Okay, fine. 3 years hence means after. Parth's age will be thrice the age of Shriya. Find Parth's age. ये वाला question. Oh, okay. Get started and please answer. Parth की age को A ले लीजिए. Let me write it over here. Parth is equals to A, Shriya is equals to B. Oh, Sejal has come up with an answer. Excellent. Let's wait for others also and then we'll start. 4 years ago कुछ बताया गया है. तो 4 years ago यानी A minus 4, Parth की age was 4 times Shriya की age. That is B minus 4. Is this equation right for all? Very good. So many correct answers popping up. तो इसको मैं अरेंज करके लिख सकती हूँ कि A is equals to 4B minus 12. ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गया. करेक्ट. नाउ सेकेंड इक्वेशन इज 3 years from the present. That is A plus 3 is equals to 3 times the age of Shriya after 3 years. That is this. And इस इक्वेशन को भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो A की वैल्यू मुझे 3B plus 6 मिल जाएगी. That's my equation number 2. Now if I solve these two equations, I will be getting the value of A and B. किसी को ये देखना है कि कैसे solve करना है या फिर you are good with it? Good with it?
ए बी साइमल्टेनियस इक्वेशन है गाइज, आप आराम से प्यार से सॉल्व कर सकते हो एंड यू वुड गेट द वैल्यू ऑफ ए एज 60 विच इज द आंसर ऑफ पार्ट्स एज एंड द अदर एज वुड बी बी एंड बी हो जाएगा कितना आपका, आई थिंक 9 into 2 18, so B would be 18, that is Shriya's age. Okay, fine, good with it, absolutely very good, thank you, I am best with it. Question number 5, we have Ray and Kashish here. So Kashish is not here in the session, but Ray is definitely there. Ray and Kashish have some marbles with them, slightly increasing your level guys, slightly. Ray says to Kashish, if you give me one marble, yeah, throughout their life, JV will always maintain it to be as 18 years old. If you give one marble to me, we'll have equal number of marbles. Kashish says that if you give me one marble, I will have twice the number of marbles you have. So find oh option से ये बहुत easily हो जाएगा. इस तरह के questions ना option में देने ही नहीं चाहिए. Option से solve करो guys. Option से solve करिए. It's very easy. Try it using the options. Convert the words into numbers. Okay, go ahead. JV has given the answer as C for this question. Okay. JV, सोचो समझो. 6 is for Ray. Hey, retract नहीं करना चाहिए. Use a star. I want to change my answer. 4 and 6. Okay, Zishan also 4 and 6. Khushi 5 and 7. Okay. Let me tell you respectively. Word respectively means Ray is number 1 and Kashish is number 2. भावुक हो गए वो 18 years old के चक्कर में. Sampath B, Sejal B. Okay. Guys, a quick shot over here. I'll just use the options and solve this question. If guys who says A, I will solve it according to that. Ray के पास अगर 4 है and Kashish के पास अगर 6 है तो Ray ने बोला that if you give me one marble, we'll have the equal number of marbles. So if Kashish gives one marble, this becomes 5 and this also becomes 5. This is true. But Kashish says that if you give me one marble, then I will have twice as many marbles as you. That means in the second case, it should be 3 over here and 7 over here, which is not working for Kashish ka statement. So option A is wrong. हड़बड़ी में गड़बड़ी. आपने सिर्फ फर्स्ट केस देखा but you did not check the second case. Let's try option B now, which many of you are saying. Sampath Chayan also added. Okay, let's check for the next option. Next option is where we take 5 and 7. ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 7. अब क्या होगा? The first statement, if I give 1, both are 6, 6, correct. Now if R gives K1, that becomes 4 and 8, which is double. Yes, भागमत. So option की help से easily solve कर सकते हैं हम इस question को. कई बार हमारे सामने question होता है but हम उस question को इसे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है question की length बहुत ज़्यादा है. Options can turn your friend. Okay, use the options carefully. Now इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार अपने बहुत सारे मॉक्स में डाला है अलग अलग वे में घुमाकर एंड इस वर्ड को देखकर 79% ऑडियंस इस क्वेश्चन को छोड़ देती है. आई वॉन्ट यू पीपल टू डू दिस क्वेश्चन एज इफ देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ यू. सिर्फ मैक्सिमम वर्ड देखकर 79% ऑडियंस इस क्वेश्चन को छोड़ देती है. You guys give it a try. Who will be the shopkeeper here? Shopkeeper has a few 100 grams weight and few 500 grams weight. अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह के 500 and 100 के डिनोमिनेशन का नोट वाला क्वेश्चन किया था. Very much similar.
he can weigh a maximum of 8 kgs in one weighing. If he has 20 pieces of the weight, then what is the maximum weight he can weigh with only 100 grams of weight? This word maximum kills people. I don't know why, but many people are afraid of this. बहुत लोगों ने तो सेशन छोड़ दिया लाइव इस वर्ड को देखकर. आप लोग उस लाइक थैंक गॉड आप लोग उस 79% में नहीं हो. यू पीपल आर एटलीस्ट ट्राइंग. try it. These sessions are made only with the purpose of you try, you lose. So it's all good. Go for it. छोटा सेशन रखती हूँ मैं ताकि जो समझो उससे रिलेटेड कम से कम 10-15 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करो तो वो कॉन्सेप्ट आपको फ्रेश हो जाए दिमाग में. I'll give a slight hint here. I'll just help you with the numeration that मैंने 100 ग्राम्स को x ले लिया, x है मेरे पास, तो 500 ग्राम्स वाले वेट कितने हो जाएंगे? 20 पीसेस है टोटल, तो वो हो जाएंगे 20 माइनस x. वो भी कर सकते हो आप, ठीक है. फिर आपको पता है कि टोटल वेट जो मैक्सिमम वो वे कर सकते हैं वो 8 kg है, तो kg को प्लीज ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना. यू कैन डू इट लाइक दिस, x into 100 plus 500 into 20. ओ रिद्धि ने आंसर दे दिया. रिद्धि आर यू श्योर? ओके, कोई मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल रहा था ना. लेट्स डू इट विद साइमल्टेनियस इक्वेशन दिस टाइम. ये माइनस एक्स वाला तो मैंने आपको दिखा दिया था. लेट्स डू इट विद साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो अगर मैं 500 ग्राम्स के वेट को y ले लूँ एंड 100 ग्राम्स के वेट को x ले लूँ, तो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20. यस और नो? बिकॉज दोनों वेट्स की वैल्यू 20 है, लाइक क्वांटिटी 20 है. करेक्ट? संपत 500. ओके, 500 वॉट? 500 ग्राम्स, ऑप्शन डी. ओके, रिधि सी. ऑल राइट, फाइन. सो नेक्स्ट, the next equation which I'll form is 100x plus 500y is equals to 8000. 8000 कहाँ से आया? This is 8 kg which is the maximum weight. Twinkle, I changed 20 minus x. मैंने इसको y ले लिया, बट अगर आप 20 minus x भी लेते हो तो it will give you the same answer. 20 minus x because of this statement that the total number of weights I have is 20. So if x is the number of weights which are 100 grams each and y is the number of weights which is 500 grams each, तो y की जगह आप 20 minus x भी लिख सकते हो. Give me a okay or understood, Twinkle, so that I'll move further. तो ये दो मेरे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए. सॉल्व करें? चलिए करते हैं. लाइक यू कैन इजीली सॉल्व दिस आउट. हमारे पास लाइक इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई एनी वन ऑफ द नंबर्स यू वुड गेट इट. ओके, खुशी, यस यस, ऑफ कोर्स आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दिस, ठीक है. बट स्टिल आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने कभी नहीं बताया है, तो लेट मी जस्ट ट्राई कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 100 ग्राम्स का वेट है, यानी मुझे x निकालना है. तो चलो y को एलिमिनेट करते हैं. 500 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 500x प्लस 500y एंड 5 इंटू 10 2 इज इक्वल टू 10, और 500 के 2 जीरोस और 20 का 1 जीरो, यानी 10,000 हो गया, ठीक है. दिस इज गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100x प्लस 500y इज इक्वल्स टू 8000. सो मेरे पास क्या बच गया? अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस माइनस, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट. 400x is equals to 2000, which means x is equals to 2000 by 400. The answer is gonna be 500. Hey, wait, I have done something. I think 500 के 2 zeros और इसका 1 zero plus एक 10, that's fine. तो कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा. 500 का ही मल्टीपल होगा. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. But then I did something. I actually, yes, this should be 5 in number, है ना. x should be 5 in number. अब x अगर 5 हो गया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि what is the maximum weight that he can weigh with only 100 grams. 5 ही नंबर है,
तो 100 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके मुझे 500 ग्राम्स मिल जाएगा. ओनली मल्टीपल ऑफ 5. ए वेट, हु सेड दिस? ट्विंकल? नो, खुशी. तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो. हमारे पास नंबर ऑफ वेट्स क्या है? 5 है ना? तो 5 को तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा. करेक्ट. सो यू आर सेइंग दैट अगर x हमारा 6 आता तो वो भी बी भी आंसर हो सकता था ना. सो आई डिडंट गेट योर कॉन्सेप्ट खुशी. अगर आप एक्सप्लेन कर दो तो इट विल बी नाइस. Twinkle, y minus 15, y is equals to 15, x is equals to 5. Excellent. Okay, Sejal. So 100 grams के 5 weights है, right? So the total maximum weight we can measure is 500. Okay, we are done. Now we are having the second last question for the day, जो कि मैंने टीटा रखा है. टीटा, without options, no guesswork, pure logic. अगेन सेम थिंग. इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वर्ड गेम है. आप पढ़ो, आप समझ जाओगे. सुमित वेंट टू अ शॉप. आज क्या बात है, जिन लोगों का नाम लिखा है मैंने वो सेशन में ही नहीं है. चलो, आप लोगों का नाम मैं यूज करूंगी. आने वाले सेशन में रहना आप लोग. Sumit went to a shop to buy a pen, pencil and ruler where costs are integral values, matlab integers. What is the definition of integers, guys? Give me true and false. Okay, -2 is an integer, true or false? -2 is an integer, true or false? Chat please. True or false? I just tried a poll for you people. -2, yes or no? You can use the poll. Yes for true and no for false. Sejal, Prakash, Zishan, Khushi, Bhagmat, true. Okay. But no one selected the poll? Okay, now you people are selecting the poll. All right, 100%. Okay. Awesome. 5 votes, 7 votes there. Aha, very nice. Okay, -2 is an integer. Very good. And one more question, huh? One more question. This one I'll end the poll and I will add something else. The other question I'll give you in the poll itself. Okay. The number is -9.6. Yes or no? 9.6. Integer. Okay. Wow. We have some yes, some no this time. Better to look at as a poll. Integral values are all the whole numbers, all the natural numbers except the fractions and decimals. तो poll बंद कर रही हूँ. Hi Gaurav, welcome to the session. So you guys are absolutely correct. Those who understood that -2 भी इंटीजर है, ठीक है. बट यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू, क्योंकि हम एक पेन, पेंसिल और रूलर की बात कर रहे हैं, तो कॉमन सेंस के हिसाब से पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगे, ठीक है. नाउ दे आर इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पेन सबसे ज्यादा है, पेंसिल उससे कम और रूलर उससे और कम. ईच आइटम कॉस्ट एटलीस्ट 4 रुपीज. मतलब कम से कम रूलर का दाम 4 तो होगा ही, बिकॉज इट्स इन द minimum value. The total cost is 15 rupees and the cost of a pencil is 5 rupees. So how many pencils can you purchase with the amount to purchase 10 rulers? Come on guys, I just spilled out the answer. Hi John Stones, welcome to the session. Good evening sir. I believe this is your first live. Okay, anyone, can you people tell me at least की वजह से again many people leave this question. So can you people tell me the cost of the ruler please? मैं कितना cost लेकर चलूं? What should be the cost I should take? Any suggestions? Should I take 7, 6, 4, 5? खुशी says 4. खुशी ने बोला तो मैं बिल्कुल मान लेती हूँ. सेजल भी बोल रही हो तो definitely. These people I can trust upon. रूरल इज 4. रूलर अगर 4 रुपीज का हो एंड 10 लूं तो ₹40 हो गया.
नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं ₹40 में कितना पेंसिल खरीद सकती हूँ. गाइस, ₹5 इज द प्राइस ऑफ वन पेंसिल. ₹5 is the price of one pencil. So 40 by 5, 8. Absolutely easiest question for the day kept at the end. But trust me, सिर्फ 2-3 लोगों ने attempt किया है इस question को. अच्छा, एक चीज बोलूंगी. Just tell me, ₹15 is relevant or irrelevant? Let me see your take on this. ₹15 जो कि दिया है इस क्वेश्चन में, इज इट रेलिवेंट और इररेलिवेंट? क्वेश्चन बनाने की टेक्निक सीख जाओगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व तो ऐसे हो जाएगा. खुशी से इज रेलिवेंट. ओके, एनीवन हु बिलीव्स इररेलिवेंट? Oh, Prakash also relevant. Well, you guys are absolutely correct. Sejal irrelevant. नहीं Sejal, irrelevant नहीं है. देखो, when we are taking the assumption कि रूरल का प्राइस सिर्फ 4 होगा, ये assumption हम सिर्फ इसी बेसिस पर ले रहे हैं कि पेंसिल का कॉस्ट 5 है, तो जो पेन का कॉस्ट होगा that will be 6. Only then it suits this. नहीं, it does not suits this. Sampath says irrelevant. Acha, okay. So, guys, tell me, how can we make the total cost as 15? How is it possible to make the total cost as 15? अगर each item ₹4 है minimum और ₹4 मैंने रूरल को दे दिया, तो पेंसिल को कम से कम ₹1 ऊपर होना होगा. दैट इज 5. वो तो हमें डेटा गिवन ही है. What should be the price of the pen so that मेरा total cost is ₹15? The answer हो गया. मैं डिनर करने गई तो I missed it. No problem, Riddhi. It's totally fine. देखो, I'll not complex it up. I'll very easily tell you one thing. The pen has to be 6 because 6 plus 4 is 10 and this one is 5 which is given. तो अब क्या होगा इस केस में? क्या होगा, आप ये फिक्स कर सकते हो कि मैम मैं इसे ₹4 लेकर ही चलूंगा या चलूंगी. अदरवाइज व्हाट विल बी द प्रॉब्लम कि मिनिमम 4 हो सकता है, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इसीलिए आप इसे इररेलेवेंट नहीं बोल सकते. हाँ, आप इसको रिडंडेंट बोल सकते हो. रिडंडेंट वाई? बिकॉज एक बार आपको पेंसिल की प्राइस ₹5 पता चल गई तो एटलीस्ट 4 को बीट करने के लिए कोई और नंबर नहीं है, क्योंकि ऑल आर इंटीग्रल वैल्यूज, राइट? तो द नेक्स्ट इंटीजर आफ्टर 4 इज 5 ओनली एंड बिलो 5 इज 4 ओनली. सो देयरफॉर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द टोटल सम. ठीक है, तो रिडंडेंट डेटा है, डबल दे दिया गया है, बट इररेलेवेंट नहीं है. ठीक है, okay, so if you know and understood this, then clap your hands and give yourself a pat at the back because आपने linear algebra का basics बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है. Now after this session I expect you कि आप समय का material या कोई भी और material जो मेगा ड्राइव में available है, मैंने chat में already pin कर दिया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे हैंडल्स. तो टेलीग्राम जाकर वहाँ पर आप मेगा ड्राइव में जाइए एंड मेगा ड्राइव में जाकर what would you do? You would go and open the materials from the various important places like Samay or any other place. ठीक है, I can prefer you some other 3 places also. वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, and this is one another thing which I am referring you people. This is the quick revision sheet जहाँ पर आप अगर quantitative aptitude की सेक्शन में जाओगे तो वहाँ आप Ctrl+F दबाकर लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड दूसरे मेरे वीडियोस भी रेफर कर सकते हो. मोर कंटेंट इज ऑलरेडी देयर, यू कैन जस्ट रेफर एंड वॉच इट. मेगा ड्राइव खुशी टेलीग्राम में है, जो पिंड चैट है वहां चले जाइए या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. you need to join the telegram link. Go to the bio, open the link in incognito mode and the password is right below the link over there. Okay, refer to that. 3 materials
अब नहीं बोल सकती मैं यहाँ पे, ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर माई सेल्फ, सो यू बेटर गो एंड एक्सप्लोर इट योर सेल्फ, और कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना. एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर योर DMs ऑन Instagram, so please DM me on Instagram only. Okay, I have stopped answering people on Telegram. All right then, so this brings me to the last question of the day, everyone. How was the session? I hope this was informative and it gave you some insight into how the algebra questions are made and किस तरह से हम धीरे धीरे अपनी level बढ़ाते हैं algebra में. If you got that, then you would be doing great. Okay, and tomorrow also we'll be having a session, so please do join that session as well. Thank you, Prakash. Thank you so much, guys. And those who are watching this in a recorded format, please comment below and let me know how was the session. और एक request है आप सभी लोगों से, please इसे share कर दिया करो यार. I just want you people to help me grow my channel, because I literally want to help more number of people with this free content, and only you people can help me in this. So please share it with more and more people you know, so that this becomes a big community. Thank you so much. Timing will be 10 PM only, Sejal, sharp at 10. Thank you so much, Zishan. Yes, Twinkle, say no. You have just written a ma'am. I am waiting. If you are typing something, I am waiting for your message. What if we take pen as 4? We will not take pen as 4 because of the word decreasing order. Decreasing order यानी pen will be the maximum, pencil will be the middle one, and minimum will be rural. ठीक है, decreasing order लिखा था ना, that's why. संपत मैम क्वांट्स में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए भी सॉल्व नहीं हो रहे कुछ दिन बाद, हुए कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है कुछ दिन बाद. हाँ, तो इसके लिए व्हाट इज द प्रॉब्लम कि आपने क्या एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे. लाइक इफ डोंट प्रेफर फिनिशिंग वन टॉपिक इन 1 वीक वाला फंडा. ओके संपत, डू इट एवरी वीक और एवरी 2 वीक सो दैट यू आर कंप्लीटली इन प्रैक्टिस. मैं भी वही कराने वाली हूँ, मैं फिर से 2 वीक बाद आपको रिपीट कराने वाली हूँ इन टॉपिक्स को. ओके, सो दैट विल हेल्प. Thank you, Zishan. Thank you, Bhagmat. Thank you so much. All right, you got it, Twinkle. Thank you. Thanks, Rudy. I'll see you all tomorrow then at 10 PM. Bye-bye. Take care, everyone, and study hard. Okay? Thank you. Thank you so much, Twinkle. Bye-bye, everyone. Good night.